A very good morning to all of you my dear friends. Last class रे आमे डिस्कशन करथिले LLP Act 2008 आमे डिस्कशन करथिले LLP कोन मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर केते मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर केते म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP ये सब बाबद रे पढिथिले एवं जदि कोनोसी पार्टनर CSS to vacate और CSS to be a partner जदि से पार्टनर रु विताड़ित होची तार रेस्पोंसिबिलिटी कोन आरओसी ऑफिस कोठी रहइबो ये सब बाबद रे हम डिस्कशन करिथिले बहुत हल्का फुल्का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक बाकी टॉपिक रे हम जते समय लगु जे एथिरे तार 20% टाइम लागिबो ओके तो बाकी आज टिके क्लास लंबा होई पारे आज जहा बाकी कंटेंट अछि रिमेनिंग पार्ट हमें कवर करिबा एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP ऑफ ए पार्टनर सिखौची LLP केस रे लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर सब पिला माने जानि छ लिमिटेड तो केते लिमिटेड से बाबद रे आज हमें पढिबा प्रथम पॉइंट रे कुआ गला पार्टनर एज ए एजेंट every partner of a LLP is for the purpose of business of LLP the agent of LLP but not of other partners सबु पार्टनर होउचंती LLP रो एजेंट किंतु अन्य कोनोसी पार्टनर रो एजेंट नहति एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी सेक्शन 27 रे कुआ गला एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी सेक्शन नंबर ता मन रखिबे दिस इज एन इंपोर्टेंट सेक्शन A LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if से कहूची LLP केबे भी बाध्य होबो नाही is not bound anything done by a partner जदि कोनोसी पार्टनर किछि हरकते करूचंती बा एक्टिविटीज करूचंती in dealing with a person if केते बेले the partner in fact has no authority to act for LLP जदि से पार्टनर को कोनोसी अथॉरिटी दिया जाइनी LLP बिहाफ रे काम करिबा पई ताहेले तार कोनोसी हरकते बा एक्टिविटीज पई LLP रिस्पांसिबल रहिबो नाही लायबल रहिबो नाही द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी ए पार्टनर ऑफ LLP जदि कोनोसी पार्टनर को लागुची जे तार कोनोसी पावर नाही और डज नॉट नो और बिलीव से जानिनी बा ताकू भरोसा आसुनी टू बी ए पार्टनर ऑफ LLP in that case LLP is not bound by the act of such partner बुझियला यस सर ठीक है आउथरे कोन अरे भाई ये पॉइंट कहूची LLP is not bound by anything done by partner जदी कोनोसी पार्टनर किछि काम करूचंती ताहाले LLP बाउंड होबो नाही केते बेले ना इफ जदी partner in fact has no authority to act for the LLP से पार्टनर रो कोनोसी अधिकार नै LLP काई काम करिबा पई किंतु से काम करूची सति पई LLP बाउंड होबो नाही एवं से पार्टनर जानि छि तार कोनोसी अथॉरिटी नाही और डज नॉट नो और बिलीव से जानि छि एवं जानिनी बा तार विश्वास नाही जे से LLP रो पार्टनर होई परिबो in that case जदि से किछि भी काम करूची ताले सेति पई LLP बाउंड रहिबो नाही the LLP is liable को केस रे LLP liable रहिबो सब पिला माने मन रखिबे if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on this part in course of business of LLP or with its authority से कहूची LLP रो बिजनेस कला बेले LLP रो ट्रांजैक्शन कला बेले जदी किछि भूलभाल हेई जाउची कोनोसी पार्टनर द्वारा जेउ पार्टनर को अथॉरिटी दिया जाईची इन दैट केस LLP कोन हबो लायबल रहे आउतरे द LLP इज लायबल इफ ए पार्टनर ऑफ LLP जदी से LLP रो पार्टनर कोन करूची लायबल टू एनी पर्सन as a result of wrongful act or omission किछि भूल भटका काम होईची बा किछि ओमिशन हेईची ऑन हिज पार्ट से पार्टनर पार्ट रु इन कोर्स ऑफ बिजनेस इंपोर्टेंट कथा मन रखिबे इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ LLP LLP पाई हमें किछि काम करथिले भूलभाल हेई जाईची
इन दैट केस एलएलपी कौन रहिबो लायबल रहिबो और विथ इट्स अथॉरिटी ता अधिकार रे ताकू जो पावर दिया जायछि से काम कला बेले जदी भी किछि भूल बटका आइ जाउछि सेति पई एलएलपी लायबल रहिबो एन ओब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी whether arising in a contract or otherwise shall solely the obligation of the LLP बुझिएला जहाँ भी LLP रो obligation अछि केवल LLP रो ही obligation कोनोसी पार्टनर रो obligation नहीं the liabilities of LLP shall be met out the property of LLP सी कहूची LLP रे जहाँ भी liability आसिला जदि फ्यूचर रे केबे डिमांड करा गला क्रेडिटर माने बाध्य कले सुझिबा पई ताहले एलएलपी रे थिबा एसेट बा प्रॉपर्टी रु कोन करा जिवो ना ताको रीडिंग करा जिवो एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आमे ऊपरे पढिले एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एबे आमे पढिबा एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑलरेडी आमे डिस्कशन करिचे टिके स्पीड करिबा ए पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल से व्यक्तिगत भाबे लायबल होबो नाही डायरेक्टली किबा इनडायरेक्टली for an obligation referred to in subsection 3 of section 27 solely by reason of being partner of LLP. Section 27 subsection 3 रे हमें कौन पढ़िले LLP रो जहा लायबिलिटी आसुची सेथि पई केवल LLB ही ओब्लाइज्ड रहिबो बा रेस्पोंसिबल रहिबो सेथि पई सेक्शन 28 रे कोआ गला ए पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल कोनोसी पार्टनर पर्सनली लायबल हेबे नाही डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो फॉर एन ओब्लिगेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 solely by reason of being the partner of LLP जे तमे LLP रो पार्टनर बोली LLP रो लायबिलिटी पई तमे ओब्लिगेशन रहिबो ए कथा न LLP रो जहा भी लायबिलिटी आसीबो सेति पई LL ही लायबल the provision of subsection 3 of section 27 and subsection 1 of this section shall not affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omission सिकुची section 27 subsection 3 रे जहा कुआ गला कोन कुआ गला ना LLP रो जहा लायबिलिटी आसीबो सेति पई LLP दाई एवं 28 रो सबसेक्शन 1 रे जहा कुआ गला 28 रो सबसेक्शन 1 रे कोन कुआ गला एलएलपी रो पार्टनर मु सेति पई एलएलपी लायबिलिटी पई मु लायबल रहिबी नाही बुझी होजी यस बुझी होजी से कहूची ए दीटा सेक्शन अप्लाई होबो नाही केते बेले जदी शाल नॉट इफेक्ट the personal liability of a partner for his own wrongful act or omission जदि गोटे पार्टनर किछि जानि सुनि निजस्व भूल करूछि but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of LLP मु LLP रो पार्टनर मु जदि निजे किछि भूल करूछि ताहाले सेति पई मु लायबल रहिबि किंतु मो द्वारा करा जायतिबा भूल पई अन्य पार्टनर लायबल रहिबे नाही बा अन्य पार्टनर मानक द्वारा करा जायतिबा भूल पई मु लायबल रहिबी नाही दैट्स ऑल फोल्डिंग आउट सब पिला माने पढिबे हालांकि एटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रे भलो भाबे पढाइतिबो फोल्डिंग आउट एहार माने कोन सब पिला माने बुझिबे एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटेन जे कहि की बा लिखित आकार रे और बाय कंडक्ट बा निज व्यवहार रिप्रेजेंट हिमसेल्फ निजको उपस्थापना करूची नोइंगली परमिट हिमसेल्फ बा जानी सुनी निजको अनुमति दउची टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी ए पार्टनर इन एलएलपी गोटे एलएलपी रो पार्टनर हिसाब रे ध्यान से बुझिबे मु कहूची बा लेखि के दउची बा मु एमिति किछि काम करूची जहा द्वारा मु निजको एलएलपी रो पार्टनर बोली कोन करूची प्रेजेंट करूची अन्य मानक आगे इज लायबल टू एनी पर्सन ताहले से व्यक्ति कोन हबो अन्य मानक प्रति लायबल रहिबो हु हैज ऑन फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन जिउ माने तार कथावार्ता बा तार एक्टिविटी को भरोसा करी गिवन क्रेडिट टू एलएलपी एलएलपी को कोन देइचंती
लोन देइचंती बा क्रेडिट एक्सटेंड करिचंती ताहले सेति पई कोन रहइबो से लोक लायबल रहइबो whether the person representing himself or represent to be a partner does or does not know that a representation has reached the person so giving credit सर एहार माने गोटे एग्जांपल देकी बुझंतु फॉर एन एग्जांपल मने कर टीसीए होची गोटे एलएलपी टीसीए होची गोटे एलएलपी ओके लेट सपोज दिस इज चिंटू जी की टीसीए रो कोन थिला ना गोटे स्टूडेंट थिला चिंटू जी की टीसीए रो स्टूडेंट थिला आइदर सी किछि कहू बा लेखि कि दो बा सी टीसीए रो सबु केयर टेक करूची टीसीए रो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनौची टीसीए रो सबु फंक्शन रे रहउची टीसीए रो पिला मानकर एग्जाम करौची सबु काम रे टीसीए रो रहउची ना बुझियो सी टीसीए रो पार्टनर नुह किंतु टीसीए रो सबु काम टीसीए एलएलपी रो सबु काम करूची बाहर लोक माने जते बेले देखुचंती जे चिंटू होची कोन ना टीसीए एलएलपी रो गोटे पार्टनर तो एहा को भरोसा करी लेट सपोज एसबीआई कहा को देखी ना मिस्टर चिंटू को देखी कौन करिची ना भाबी नेची जे चिंटू होची टीसीए एलएलपी रो गोटे पार्टनर एसबीआई कौन करिची ना 50 लाख रो गोटे क्रेडिट देला कहा को ना टीसीए एलएलपी इन दैट केस जदि एलएलपी रीपे न करि पारुची इंटरेस्ट बा प्रिंसिपल चिंटू विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट जदियो चिंटू सारा पार्टनर हेनी बा पार्टनर नाही फिर भी सी रेस्पॉन्सिबल बा लायबल रही बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला यस सर बुझिएला however where any credit is received by LLP जदि LLP किछि क्रेडिट रिसीव करूची as a result of such representation चिंटू रो ए एक्टिविटी पई टीसीए एलएलपी किछि क्रेडिट रिसीव कला लोन रिसीव कला द एलएलपी shall without prejudice the liability of a person so representing himself or represent to be a partner कौन कहला द एलएलपी shall एलएलपी कौन करिवो without prejudice the liability of the person से कहूची टीसीए कौन करिवो ना चिंटू रो लायबिलिटी को बिना माने क्षत न पहुंचाई अर्थात चिंटू मुंड को बोझ जिबा पूर्वरु टीसीए एलएलपी सेठी छिड़ा हबो माने कोन ना लायबल रहिबो टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयर बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला यस सर बुझिएला सर आउ थरे ए पॉइंट को जल्दी हमको कहि दियो मने कर टीसीए होची गोटे एलएलपी चिंटू होची गोटे स्टूडेंट जेहेतु चिंटू होची टीसीए रा गोटे बहुत निर्भरयोग्य स्टूडेंट बा गोटे भलो स्टूडेंट सहित भलो सी गोटे सोशल वर्कर मध्य से कोन करूची ना टीसीए एलएलपी रे सबु एक्टिविटीज रे भाग नउची सबु काम करूची तो बाहर लोक माने जी भी देखुचंती से माने भाबुचंती चिंटू होची एलएलपी टीसीए एलएलपी रा गोटे पार्टनर एहा को आखि आगे रखी एसबीआई कोन करूची ना किछि क्रेडिट फैसिलिटी दउची बा अन्य वेंडर्स माने क्रेडिटर्स माने किछि क्रेडिट फैसिलिटी दउचंती इन दैट केस जदियो चिंटू टीसीए एलएलपी रा गोटे पार्टनर नुह फिर भी से लायबल रहिबो किंतु 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 एक्ट कहूची भाई टीसीए एलएलपी तमे तो से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं छ यस आमे से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं छु तो चिंटू को लायबल करिबा पूर्वरु जथा संभव तमे से जेउ फाइनेंशियल बेनिफिट पाइछ बा क्रेडिट पाइछ सेति पई आगे रेस्पोंसिबल बुझी होछ ना बुझी हो यस सर बुझी होछ तापर आकु कुआ जाय होल्डिंग आउट आमे गोटे पढिबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेतिरे कुआ जाय एजेंट बाय होल्डिंग आउट माने कोन एक्चुअली से एजेंट नुह किंतु तार एक्टिविटीज कहूची जे सी गोटे एजेंट ए केस रे कोन हला चिंटू एक्चुअली टीसीए रो पार्टनर नुह किंतु तार एक्टिविटीज हरकते बिहेवियर सब किछि लागुची सी एलएलपी रो पार्टनर बनी ताकू कुआ जाय पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बा एजेंट बाय होल्डिंग आउट
तापर अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड मन रखिबा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जदि तुमर क्वेश्चन एथरु आसे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बा सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन एग्जाम रे ए पॉइंट रु आसी जदि कि फ्रॉड करूची फ्रॉड माने कोन इंटेंशनली जने भूल करूची टू गेट द अनयूजुअल बेनिफिट ताहले ताको हमें फ्रॉड कहिबा in the event of an act carried out by LLP or any of its partner कौनसी पार्टनर्स रो बा कौनसी LLP रो एक्टिविटी जोगु with intent to defraud the creditor जी की कौन करूची ना तार इंटेंशन होची क्रेडिटर को ठकीबा क्रेडिटर को चीट करिबा of LLP or any other person क्रेडिटर को बा अन्य व्यक्ति को ठकीबा होची मुख्य उद्देश्य फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस कोनोसी फ्रॉडुलेंट उद्देश्य रखी की आउथर देखिबे इन इवेंट ऑफ एक्ट से एक्ट की करूची एलएलपी निजे करूची बा कोनोसी पार्टनर तार पार्टनर माने करूचंती कोन करिया पई विथ एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर क्रेडिटर को ठकीबा पई और एनी अदर पर्सन or for any fraudulent purpose the liability of LLP and partner who acted with intent to defraud creditor or for any fraudulent purpose shall be unlimited से केस रे liability कोन हे जिवो unlimited हे जिवो for all or any of debt or other liability of LLP बुझिउछ सेही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जोगु जदि थर्ड पार्टी को बा क्रेडिटर को किछि क्षति पहुंचौची लॉस होउची इन दैट केस तमरो लायबिलिटी अनलिमिटेड हे जे हाउएवर इन केस एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय द पार्टनर एलएलपी करूनी तार पार्टनर माने करूचंती द एलएलपी इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or the authority of LLP एहर माने कोन सब बिला माने बुझिले से कहिला जदि कोनोसी पार्टनर करूची ऊपर पॉइंट रे हम देखिले एलएलपी करूची एवं एलएलपी रो पार्टनर माने करूची किंतु ए पॉइंट रे कहूची जदि एलएलपी रो नॉलेज रे नाही एलएलपी रो नॉलेज रे नाही अन्य पार्टनर माने कोन करूचंती फ्रॉड करूचंती अन्य पार्टनर माने कोन करूचंती फ्रॉड करूचंती तो इन दैट केस एलएलपी रेस्पोंसिबल बा लायबल रहिबो नाही किंतु 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 जदि एलएलपी रो परमिशन रे एलएलपी रो अथॉरिटी रे एलएलपी रो नॉलेज रे कोनोसी पार्टनर माने फ्रॉड करूचंती ताहले पार्टनर माने तो लायबल रहिबे सेमानकर लायबिलिटी अनलिमिटेड रहिबो इन एडिशन टू दैट एलएलपी रो मध्ये लायबिलिटी अनलिमिटेड हे छी बुझिएला yes where any business is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1 अर्थात कोनोसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पई जदि किछि बिजनेस कैरी करा जाउछि एवरी पर्सन हु इज नोइंगली ए पार्टी से कहूछि प्रत्येक व्यक्ति हु इज नोइंगली टू द पार्टी जो माने जानी सुनी कोन करूचंती to carrying on the business in the manner aforesaid carrying on of the business से business को carry करूचंती in the manner aforesaid ऊपर जो manner हमें आलोचना कले अर्थात fraudulent activity करूचंती shall be punishable सेमानु को punishable करा जिवो केते टंका imprisonment 2 वर्ष पई and with a fine shall not be less than 50,000 but which may be extended to 5 lakh चकी पिसिंग and 50,000 रु 5 लाख टंका पेनाल्टी मध्ये पड़े where a LLP or any partner or designated partner or employee LLP निजे बा तार कोनोसी पार्टनर किंबा डेजिग्नेटेड पार्टनर किंबा LLP रो एम्प्लॉय has conducted the affairs of LLP जे कि LLP रो affairs को conduct करूचंती
in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceeding which may arise under the law for the time being in force, the LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered loss or damage by reason of such conduct. बुझियल से कहूँ LLP तार कौन सी पार्टनर कौन सी डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन सी एम्प्लॉय जदि फ्रॉडुलेंट मैनर रे किछि एक्टिवेटेड करूचंती देन विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये कौन सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ठारू मध्ये कम नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मध्ये ताको अगेंस्ट चलिबो व्हिच मे राइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स जे कोनोसी लॉ एक्ट रे तमरो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अनुसार हो कि कोनोसी बॉडी कॉर्पोरेटर एक्ट अनुसार हो ताको अगेंस्ट रे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलिबो एवं से माने कंपेंसेशन देबे से व्यक्ति को जहार लॉस हेछि बा जहार किछि डैमेज हेछि हाउएवर such LLP shall not be liable LLP liable केते बेले रहइबोनी if any such partner or designated partner or employee जदि कोनोसी पार्टनर designated partner बा employee has acted fraudulently without the knowledge of LLP रो बिना परमिशन रे बिना नॉलेज रे बिना अथॉरिटी रे जदि कोनोसी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बा एम्प्लॉय किछि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करूचंती ताहेले सेति पई सेही पार्टनर माने डेजिग्नेटेड पार्टनर माने एम्प्लॉय माने लायबल रहिबे किंतु LLP रहिबो नाही बास चैप्टर सरिला व्हिस्टल ब्लोइंग एहार माने कोन सब पिला माने बुझिबे एवं पढिबे द कोर्ट और ट्राइब्यूनल मे रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी leviable against any partner or employee of LLP if it is satisfied that ऊपर आमे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पढ़ी के आसिले जे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी द्वारा जदि किछि लायबिलिटी आसुची अन्य पार्टी की बा लॉस अराइजेस होउची ताहले से पर्सन लायबल रहिबो एवं पेनाल्टी दबो 2 वर्ष पेनाल्टी दबो 50,000 टंका रु 5 लाख टंका पर्यंत जुरिमाना मध्य दबो किंतु कोर्ट आ ट्राइब्यूनल को पाखरे पावर अछि से माने कोन करि परिबे से पेनाल्टी की कमी परिबे जदि से मानको लागिला इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट such partner or employee of LLP रो पार्टनर बा एम्प्लॉय माने कोन हिचंती has provided useful information during investigation of such LLP से LLP ऊपर इन्वेस्टिगेशन हला बेले जहा जा इंफॉर्मेशन दरकार थिला पार्टनर बा एम्प्लॉय माने देइछथि किंबा जदि कोर्ट को बा ट्राइब्यूनल को लागुची एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय बा पार्टनर माने जहा जहा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू LLP or any other partner or employee of such LLP being convicted under this act or any other act अर्थात ए पॉइंट को भलो भाबे बुझिबे चारि जण पार्टनर थिले A B C D C केवल फ्रॉड करिछि तो सेति पई कोन होउची ना ये समस्त बंधा है किंतु जेते बेले कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कला LLP A B D अर्थात LLP रो सब एम्प्लॉय एवं अन्य पार्टनर माने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देले जे भाई आमे एथिरे संपृक्त नाउ एथिरे C केवल संपृक्त अछि से केस रे कोर्ट बा ट्राइब्यूनल एमानकर पनिशमेंट को कोहळ करि पारे नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ LLP मे बी डिस्चार्ज एग्जाम रे दीटा रीजन पडुछि से कारण दर्शा को केस रे नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी LLP मे बी डिस्चार्ज
demoted, suspended, threatened, harassed, or any other manner discriminated against the terms and condition of his LLP or employment merely because of providing information or causing information to be provided pursuant to subsection 1. ସବୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟନର ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବେଳେ ସବୁତକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ LLP କ'ଣ କରିବ ନା A, B ଆଉ D ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ନେବ। ଓବିୟସଲି ଏମାନେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ, ନା ବାବା ନା। ସବସେକ୍ସନ 2 ରେ କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ପାର୍ଟନର ବା କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଫ LLP ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବନି, ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ମାନେ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବନି, ଡିମୋଟେଡ ପ୍ରମୋସନ ଡିମୋଟେଡ କରାଯିବନି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯିବନି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯିବନି, ହାରାସ୍ଡ କରାଯିବନି ବା କୌଣସି ମ୍ୟାନରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯିବନି ବା ଲଜ୍ଜିତ କରାଯିବନି। ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ହିଜ LLP ସିଏ ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ଅର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିୟରଲି ବିକଜ ଅଫ ବା ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଯାହା ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ମିୟରଲି ବିକଜ ଅଫ ମାନେ ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ଯେ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ସବସେକ୍ସନ 1 ରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ବି LLP ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲା ପଚାରିଲେ ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେଲା ତାହେଲେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେଲା ତାହେଲେ ଆକ୍ଟ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? यस। 7 नंबर पॉइंट होची बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। से कहूची LLP रे बुक्स ऑफ अकाउंट्स केमिति मेंटेन करा जिवो बा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कोन कोन रही। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रिकॉर्ड एंड ऑडिट सेक्शन 34 रे कुआ गला। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स LLP मेंटेन करिवो। LLP shall maintain such proper books of accounts as may be prescribed relating to affairs of each year of its existence। प्रत्येक वर्ष जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन कला जो पर्यंत LLP अच्छी तार प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करिवो। कैश बेसिस रे मेंटेन करि पारे, एक्चुअल बेसिस रे मेंटेन करि पारे एवं सेति कि नो एवं आ कोन करिवो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम हिसाब रे मेंटेन करिवो। शाल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर ऑफिस, केवल सेति कि नो ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर ऑफिस रे रिकॉर्ड रखिवो such a period as may be prescribed। okay, statement of accounts and solvency से कुछ every LLP shall within a period of 6 months 6 मास भितरे कोन करिवे end of financial year जो डेट रे फाइनेंशियल ईयर सरिला सेउडू 6 मास भितरे कोन करिवे से माने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनेबे एवं सॉल्वेंसी मध्ये बनेबे for the said financial year as at the last date of said financial year। अर्थात सब पिला माने बुझिले मने कर वर्ष सरुची 31 मार्च, 31 मार्च रे ईयर एंड होची। ए 31 मार्च रु 6 मास भितरे यानी 30th सितंबर भितरे से माने कोन करिवे से मानकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनेबे एवं सॉल्वेंसी बनेबे को डेट रो ना फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च। बुझिला 31 मार्च रो अकाउंट बनेबा पई आमो पाखरे केते दिन समय अछि ना 6 मास समय अछि LLP केस। इन सच फॉर्म as may be prescribed and such statement shall be signed by designated partner। ये सब स्टेटमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करिवो। Every LLP shall file within a prescribed time statement of account and solvency prepared with the register। LLP जहाँ भी statement of accounts बनौची
ताकू कहा सहित फाइल करिवो ना रजिस्ट्रार सहित फाइल करिवो एवरी ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर and accompanied by such fee as may be prescribed एवं से आरओसी सहित सही मैनर जेउ मैनर प्रेस्क्राइब करा जायछि बा दिया जायछि जेउ फी कुहा जायछि से फी डिपोजिट करिवो एवं पैसा जमा करिवो the accounts of LLP shall be audited in accordance with such rule as may be prescribed सबु LLP रो accounts मध्ये audit हबो however central government may by the notification in the official gazette exempt any class or classes of LLP for requirement of subsection जदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लागिला ना ए LLP मानकर कोनोसी ऑडिट होबा आवश्यक नाही ताहाले से तार नोटिफिकेशन बाहर करिवो ऑफिशियल गैजेट रे एवं से मानको एग्जेम्पशन दिया छै जदि कोनोसी LLP प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कला नाही ताहाले कोन हबो पनिशेबल केते टंका any LLP which fails to comply the provision of this section shall be punishable with a fine shall not be less than 25,000 जहा को हमें 5 लाख पर्यंत एक्सटेंड करि परिबा खाली सेति कि जेउ डेजिग्नेटेड पार्टनर रहिले डेजिग्नेटेड पार्टनर मानकर रेस्पोंसिबिलिटी अधिका of such LLP shall be punishable fine which not less than 10,000 minimum 10,000 जहा मैक्सिमम 1 लाख टंका पर्यंत फाइन मिली पारे अरे बुझिएला ना बुझिएला यस सर बुझिएला यस सर बुझिएला यस सर बुझिएला आउ 2 पेज अछि 10 मिनिट्स भीतर सरी जीवो बहुत इजी है चैप्टर एनुअल रिटर्न every LLP shall file the annual return duly authenticated with the ROC within 60 days for closure of its financial year जेबे सरीला सही डेट रु 60 दिन भितरे तार अकाउंट्स को कोन करिवे तार एनुअल रिटर्न फाइल करिवे रजिस्टर सहित इन सच फॉर्म सही फॉर्म रे सही मैनर रे accompanied by such fee as may be prescribed एग्जांपल रे कुआ जाईची सपोज कोनोसी गोटे LLP रो फाइनेंशियल ईयर सरुची 31st मार्च 2020 रे देन LLP तार एनुअल रिटर्न केबे फाइल करिवो बाय 30th मे 2020 सुधा कारण 60 डेज भितरे एनुअल रिटर्न फाइल करिबा को पड़े द LLP contradicting from the partnership act 1932 has prescribed the filing of annual return in accordance with the companies act 2013 this is a new features of LLP the any LLP which fails to comply जदि कोनोसी LLP 60 दिन भितरे तार एनुअल रिटर्न फाइल करूनी फाइन सेम फाइन 25,000 मैक्सिमम 5 लाख एवं डेजिग्नेटेड पार्टनर 10,000 मैक्सिमम 1 लाख ओके आउ गुटे छोटो क्वेश्चन आसी पारे विंडिंग ऑफ एंड डिसोल्यूशन ऑफ LLP गोटे LLP केते बेले भांगिबो बा डिजॉल्व हिजिबो the winding of a LLP may be either voluntary हमें जेते बेले चाहिबा सेते भांगी परिबा or by the tribunal court रो ऑर्डर अनुसार and LLP so owned of may be dissolved जेउ LLP भांगी गला संगे संगे डिजॉल्व हिजिबो circumstances in which LLP may be wound off by the tribunal order से कुछ को केस रे कोर्ट ऑर्डर दबो जे हे LLP तमे भांगी जा तमरा एग्जिस्टेंस रहिबा उचित न प्रथम कंडीशन if LLP decide that LLP be wound off by the tribunal जदि LLP सेमानकर मीटिंग रे डिसीजन नेले आउ हमें बिजनेस करिबानी बिजनेस को भांगी दबा ताहाले कोर्ट ऑर्डर दबा तमे भांगी घर पर if for a period of more than 6 months जदि 6 मास धरी कोन हैला the number of partner of LLP reduced below 2 already a point हमें डिस्कशन करि छी जदि नंबर ऑफ पार्टनर 2 रु कमी गला 6 मास पर्यंत ठीक अछि तमे बिजनेस चलै पारो कारण आउ पार्टनर खोजिबा पई समय लागिबो किंतु 6 मास रो अधिक हले कोर्ट ऑर्डर दबो भांगी जबो if LLP unable to pay its debt
जदि तमे जे पैसा धार आनिछ ताकू देई पारुना ताहले कोर्ट ऑर्डर दबो तुम बिजनेस मांगी तुम घर को पळा. If LLP has acted against the interests of the sovereignty and integrity of India, India against रे तमे स्लोगान दउछ काम करूछ भारत रो समाज अगेंस्ट रे सोसाइटी अगेंस्ट रे इंटीग्रिटी अगेंस्ट रे सोवरजिनिटी अगेंस्ट रे तमे काम करूछ ताहले टाटा बाय बाय. If the LLP has made a default in filing with the ROC a register the statement of accounts and solvency or annual return. Statement of accounts 6 मास टाइम थिला ROC पाखरे सबमिट करिया पई annual return 60 दिन भितरे क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमको सबमिट करिया को पड़िबो. जदि तमे करूनो ताहले फॉर एनी 5 consecutive financial year जदि लगातार 5 वर्ष पर्यंत तमे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न आरओसी सहित फाइल करनियो ताहले कोर्ट तुमको ऑर्डर दबो टाटा बाय बाय. इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट जदि ट्राइब्यूनल को लागुची इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द एलएलपी शुड बी ओन्ड ऑफ. ट्राइब्यूनल को लागुची भाई बहुत हे गला एबे तमरो माने बेडिंग बस्तानी बांधी घर को जीवार समय आसी गला जस्ट एंड इक्विटेबल ताहले से केस रे मध्ये ट्राइब्यूनल ऑर्डर दबो. 4 मार्क रो क्वेश्चन जो माने सीए फाउंडेशन सीए इंटर दउछ बा सीएमए फाउंडेशन दउछ इतरु गुटे क्वेश्चन आसुची पक्का गुटे क्वेश्चन आसीबो को केस रे ट्राइब्यूनल ऑर्डर दबो से केस रे तुमको सेक्शन लिखि के आसीबा को पड़िबो. बुझियला माय डियर फ्रेंड्स जदि तुम देखिबो 2 घंटा भीतर हम चैप्टर कंप्लीट करले हालांकि हमको डिस्टिंक्शन किछि आलोचना करिवार अछि इंपोर्टेंट डेफिनेशन किछि नाही इंपोर्टेंट डेफिनेशन स्टाइल मारिया को तुम सहित देइछि खाली हम डिस्टिंक्शन पढिबा. डिस्टिंक्शन तुमे घरे पढि पारिबो बट तुम सहित मु भी पढिबी 2 मिनिट रे डिस्टिंक्शन सरि जबो देखिबा कोन अछि. एग्जाम रे पढुछि डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी. रेगुलेटिंग एक्ट सब पिला माने जानि छ पार्टनरशिप एक्ट होछि 1932 एलएलपी एक्ट होछि 2008. बॉडी कॉर्पोरेट आमे पढिचे बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी रे पार्टनर हेई पारिबे एवं एलएलपी इटसेल्फ इज ए बॉडी कॉर्पोरेट किंतु पार्टनरशिप फर्म गोटे बॉडी कॉर्पोरेट नुह. सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी रो सेपरेट लीगल एंटिटी अछि इटी किंतु पार्टनरशिप फर्म रे it is a group of person with no separate legal entity. Partnership firm रो कौनसी separate legal entity नहीं. Creation LLP केमिति created हेता है it is created by legal process. तुमको registration करिया पड़िबो document को incorporation करिबा को पड़िबो called registration under LLP Act 2008. It is created by legal process called registration से लीगल प्रोसेस को हमें registration कही था LLP Act 2008 अनुसार. It is created by an agreement between the partner. Partnership only agreement रे ही चले. Registration LLP रो registration होची mandatory माने compulsory. LLP can sue and be sued its own name. एलएलपी अन्य जन को सीउ करि परिबो एवं अन्य जने केही एलएलपी की मध्य सीउ करि परिबो कोर्ट. पार्टनरशिप फर्म केस रे कंपल्सरी नै इट्स ए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी ओनली द रजिस्टर फर्म कैन सीउ द थर्ड पार्टी. जदि तमे रजिस्ट्रेशन नेलो ताहले तमे थर्ड पार्टी की सीउ करि परिबो. परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी रे आमे पढी के आसिले परपेचुअल सक्सेशन अछि जदि कोनोची डेथ होची इंसानिटी होची रिटायरमेंट होची ताहले कोन हबो डज नॉट इफेक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी. मेंबर माने चेंज हेई पारंती पार्टनर माने चेंज हेई पारंती किंतु एलएलपी रे किछि जायस नै. मेंबर मे जॉइन मे लीव बट इट्स एक्जिस्टेंस कंटिन्यूज फॉरएवर. किंतु डेथ इंसानिटी रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर बा पार्टनर्स may affect its existence. It has no perpetual succession. Partnership ro perpetual succession nahi. तापर जदि हमें पढ़िबा name of LLP to contain the word limited liability partner as suffix.
प्रीफिक्स आउटा होची सफिक्स प्रीफिक्स माने पूर्वरु जेमति कि सीएम अजय कुमार साहू माय नेम मो नेम पूर्वरु मु सीएम लगौची इट इज कॉल्ड एज सीएमए प्रीफिक्स किंतु एलएलपी सफिक्स माने ना परे रहिबो टीसीए एलएलपी बुझी होची यस name of LLP to contain the word limited liability partner as suffix no guidelines partnership business रे किछि सेमिति ना ना गाइडलाइन नाही जनरली कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर रे फार्म रो ना दिया जाता है एबीसी एंड को एक्सवाईजेड एंड को राम एंड को लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स इज लिमिटेड एलएलपी केस रे हमें पढ़ी के आसिले लाइबिलिटी होची लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू बी एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड willful fraud जदि जानी सुनी तमे किछि फ्रॉड करिछ इन दैट केस लायबिलिटी हिज अनलिमिटेड अदरवाइज एलएलपी केस रे लायबिलिटी होछि लिमिटेड किंतु आमे पार्टनरशिप एक्ट बहुत छोट बेलु पढी के आसी जे एवं जानी जे जे पार्टनरशिप बिजनेस रे कोन हुए लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड liability of each partner is unlimited it can be extended up to the personal asset of the partner जदि फार्म रो asset sufficient न होला ताले पर्सनल प्रॉपर्टी की मध्य टेक केयर निया म्यूचुअल एजेंसी each partner can bind the LLP by his own act but not the other partner मु एलएलपी की बाउंड करि परिबी किंतु अन्य पार्टनर मानकु बाउंड करि परिबी नाही किंतु पार्टनरशिप बिजनेस रे हमें पढिथिले गोटा म्यूचुअल एजेंसी बा utmost good faith each partner can be bind the firm as well as other partner मोर एक्टिविटीज मई मो फार्म तो लायबल रहिबो अदर पार्टनर माने मध्य लायबल रहिबे को केस रे पार्टनरशिप केस रे डेजिग्नेटेड पार्टनर आमे जानि छे मिनिमम 2 जण डेजिग्नेटेड पार्टनर रहिबे जणे कोन हेतिबो इंडियन रो रेसिडेंट हेतिबा दरकार किंतु एमिति कोनोसी प्रोविजन नाही पार्टनरशिप एक्ट रे जे डेजिग्नेटेड पार्टनर रो प्रोविजन कॉमन से LLP रो आमे पढी के आसिले इट मे हैव इट्स कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर किंतु देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ कॉमन सील इन केस ऑफ पार्टनरशिप एते गुडे पॉइंट अछि तुमको एग्जाम रे 7-8टा पॉइंट लिखिबार अछि लीगल कंप्लायंस only the designated partner are responsible for all the compliance and penalties under this act jette gudiya statutory compliance achi that is the responsibility of designated partner kintu partnership business re all partner are responsible for all the compliance and penalties sabu partner responsible rahe annual filing of document ame पढ़ी के आसिले statement of accounts statement of solvency एवं annual return LLP फाइल करिवो आरुस सहित annual statement of accounts एवं solvency ए दीटा फाइल हबो within 6 month financial year end होबार 6 मास भितर whereas annual return फाइल हबो within 60 days from the close of its financial year partnership firm is not required to file any annual document to the arus foreign partnership foreign national can become a partner of LLP हमें पढ़ी छे गोटे foreign LLP मध्य इंडिया रे पार्टनरशिप नहीं पारिबो foreign national cannot become a partner in a partnership firm generally partnership firm रे foreign partner माने नहीं पारिबे नहीं किंतु LLP रे नहीं पारिबे minor as a partner minor cannot be admitted for the benefit of LLP किंतु पार्टनरशिप एक्ट रे अछि फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्म आमे माइनर को कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विथ द प्रायर कंसेंट ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर बुझियले बहुत इजी पॉइंट मु एक्सपेक्ट करूची ए पॉइंट गुडा सब तमरो मने रहि जेबो बेली डिस्टिंक्शन बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी देखिबा बहुत सिंपल एलएलपी रो एक्ट होची 2008 कंपनी रो एक्ट होची 2013 members वा partners the person who contribute to LLP are known as partner of LLP the person who invest money in share are known as members of the company बा ताको हम शेयर होल्डर बोली कहितो बुझियो छी यस
Internal governance structure. The internal governance structure of LLP is governed by the contract agreement between the partners. पार्टनर भितर एग्रीमेंट है कि इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिफाइन करा जी. The internal governance structure of a company is regulated by statute. That is कंपनी एक्ट 2013 अनुसार तुमको कोन करिबा को पड़िबो, एमओए बनेबो पड़िबो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेबो को पड़िबो. नेम जेते बेले बिजनेस रो ना आसीबो सफिक्स अर्थात नेम ऑफ एलएलपी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी एज ए सफिक्स. किंतु लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी केस रे the word private limited suffix भावे मध्य यूज करा जाए. The name of the public company to contain the word limited and private company to contain the word private limited as a suffix. एटी LLP suffix, सेटी LTD बा private LTD suffix. Number of member आमे पढ़ी के आसिले LLP केस रे मिनिमम 2 मैक्सिमम कोनोसी लिमिट नाही. किंतु प्राइवेट कंपनी रे आमे जानि छे मिनिमम 2. प्राइवेट कंपनी केस रे मैक्सिमम केते हेबे? प्राइवेट कंपनी केस रे मिनिमम 2 मैक्सिमम हेबे 200 मेंबर. पब्लिक कंपनी केस रे केते हेबे ना मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड. मेंबर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन हे परिबे, ट्रस्ट हे परिबे, अनदर बिजनेस फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल हे परिबे. किंतु एथिरे की हे परिबे ओनली इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी मेंबर. लायबिलिटी ऑफ मेंबर और पार्टनर्स समस्त जानी चंती एलएलपी केस रे लायबिलिटी ऑफ मेंबर बा पार्टनर होची लिमिटेड अनलेस से माने फ्रॉड करूचंती, विलफुल फ्रॉड करूचंती. विलफुल फ्रॉड केस रे लायबिलिटी हिजबो अनलिमिटेड. किंतु लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑन पेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम. कंपनी केस रे लेट सपोज गोटे शेयर रो वैल्यू होची 10 टंका, मु 1000 टा शेयर परचेज करिछि, ताहले मोर लायबिलिटी केते टंका रहिबो ना 1000 into 10 that is 10,000 टंका मोर लायबिलिटी रहिबो. मैनेजमेंट the business of company managed by the partner including the designated partner authorized in the agreement. किंतु affairs of company are managed by the board of director. तुमे गले पढिबो कॉर्पोरेट लॉ रे पढिबो जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर आमे जानि जे मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर होचंती 2. आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जते बेले आमे पढिबा नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए बोर्ड ऑफ ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी केस रे 2, पब्लिक लिमिटेड केस रे 3. मिनिमम बुझियला? अरे बुझियला कि बुझियला? एहा सहित आमे एलएलपी एक्ट को 8 कंप्लीट करले. मु एक्सपेक्ट करिबि तुमे माने बुझिथिबो एवं घरे आउ थरे लेखा पढिले निश्चित भाबरे तमर मन रहि जिवो. नोट्स भी अछि, क्लास भी अछि, क्लास लाइन टू लाइन मु तुम सहित डिस्कशन कली. जदि कोनोस जगह रे तुमको लागुची मु फास्ट जाईची ताहले वीडियो को पॉज करिकि पॉज लियो एवं आराम से क्लास कंप्लीट कर. ओके, आजि पई एति कि फोन देखाबो आउ एक नुवा क्लास रे विथ नुवा चैप्टर सहित. बाय बाय, टाटा.